sing and has supported us and lent his wonderful, wonderful singing to the album and its concert. Sushil Sharma ji from Geetanjali, who is, as you can see, supporting the cause and presenting this wonderful epic event to you. And Pratap Singh Chauhan ji, who is a co-producer with Aadesh ji. We have the stage over to them. I would like to call Rajiv, who's the director of the show. Please, Rajiv, come. And really sorry for this delay. मैं चाहूँगा कि अमित जी Apologies first for the delay. There's been a miscommunication. I was supposed to be in the next hotel for another press conference, but I think there's been some miscommunication. So my apologies. Some time ago, Aadesh and me, who often spend a lot of time together in his music hall, discussed the idea of a song which would primarily be depicting peace, not just within the country but outside the country as well. And through his services, he recorded a wonderful item. He went abroad, he got some very prominent musicians. He got the London Philharmonic Orchestra to put in their very valuable support into this project. And then, through the obvious question, wanting me to sing in it, which is a bit of a bother because I'm not a singer. But eventually, a lot of people have got together to make this song. And then he felt that not just making a song which is going to work for peace is sufficient. He wanted to hold a concert where we would perform live and get many other top singers to perform live and make it an occasion for charity for the police force of Mumbai. We did have an earlier very small press conference where we had made this announcement and even presented a small check towards the police force. This is soon after 26/11, and thereafter we've been working together and how to put together this concert. This is now happening on the 30th of January at the Aadesh Sports Complex, and we have all the people that are involved in this, the singers, the musicians, the orchestra, everyone coming down, and we hope that we can collect sufficient money to be able to donate to the Mumbai police force, especially those people who suffered during the time of the 26/11 attack on this city. ये जो जर्नी थी मेरी और 4 साल पहले की थी, और जैसा आप सब जानते हैं कि इसको एक विजन था मेरा पीस को लेकर के, जिसमें मेरे खुद 2 दोस्त थे जो लंदन से आए थे, जो उसमें उनकी भी डेथ हुई थी, और इसको ले करके ये मैंने पूरा एल्बम कंपोज किया। और दादा हमेशा अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं when the song is, मतलब जब कंसर्ट होता कि मैं नहीं गा सकता, तो ये पहली बार होगा, और इसलिए क्योंकि एक राग, पूरा बेस राग, एक बंदिश है जो दादा ने गाई है, राग पसंद, और उसी को हम लोग कंपोज कर रहे थे साथ में। और जब गाना हुआ तो कुछ एक अनोखी चीज आई जो मैं रियली एक आप सबके सामने, मीडिया के सामने, इवन हमारे ऑडियंस के सामने ये पेश करना चाह रहा था। बट ये 2 साल आप सब जानते हैं जैसे कि मैं कैंसर से जूझ रहा था, और इसलिए ये पोस्टपोन होते होते ये मेरी लाइफ का पहला एक कॉन्सर्ट है, और जिसमें मेरे साथ जो दादा का एक आशीर्वाद रहा हमेशा, वो मैं शायद जिंदगी में क्या कभी मैं और मेरे परिवार नहीं भूल पाएगा। दादा हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं और खड़े हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। एंड दादा आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे, टाइम का थोड़ा सा हो गया। एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल माय आर्टिस्ट, स्पेशल शान, कैलाश, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, और एक पीस को लेकर के है और ग्लोबली है, और आप सबका साथ, आप सब यहाँ पे आए, तो मैं चाहता हूँ कि 30 तारीख को भी आप सब साथ आए और एक
पीस को हम आगे बढ़ाएं। Good evening everyone. एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि इस कॉन्सर्ट में जितने गाने हैं सारे ओरिजिनल गाने हैं, कोई गाना फिल्म का गाना या उस तरह का नहीं है, तो ये बहुत अलग किस्म का एक अनूठा शो होगा और हम सब आज जी के कुछ बहुत बेहतरीन कॉम्पोजिशंस के लिए गा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए ये सबसे ख़ास बात है कि अमित जी के साथ बैठा हूँ, पास बैठा हूँ और कुछ सोच नहीं रहा है। इट विल बी अ ग्रेट शो टुमारो. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. Before we go on, we'd like to give you a